Hello children, this is Shweta Tiwari. I am going to restart again lesson 3, animal senses. Today we are going to discuss about sense of touch. As we can feel the sense of touch with the help of our skin. In the same way children, animals are also having different sense organ which helping them to sense their surrounding or help them to sense their food item or their prey. First example has given here about the cockroach. A cockroach can detect the tiniest movement, means the smallest movement with the help of its feelers. Children, what is feeler? Feeler means antenna type of outgrowth on the head of these cockroaches. In the picture you can see these are called feelers और एंटीना है ना. इन अनदर लैंग्वेज यू कैन से ये जो एंटीना दिख रहा है एक्चुअली दीज आर द फीलर्स विच हेल्प देम टू फाइंड आउट स्मॉलेस्ट मूवमेंट by which a cockroach can find out its food or anything else. In the same way, a crab which is living in the marine water or in the simple fresh water, जैसे झील है, तालाब है, तो all or river it is, a crab has hairs on its claws. उसके जो पंजे होते हैं, on their claws they are having hairs या फिर on their other part of the body. Actually which help them to detect the water current and vibration. Children, what do you mean by water current and vibration? Whenever we are putting any piece of stone in the water, you can see the circles are created of because of water. What is that? ना, जब भी हम उसके अंदर किसी चीज को फेंकते हैं उसमें एक सर्कल जैसा पैदा होता है. आई एम पुटिंग दिस. हैव यू सीन? कुछ सर्कुलर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं जिसको आप तरंगे बोलते हो. दीज आर कॉल्ड द वाइब्रेशंस, है ना. यही है वाइब्रेशंस. किसी चीज़ के टकराने से पानी में जो तरंगे पैदा हो रही है या वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, एक्चुअली दीज आर द वाइब्रेशंस. नाउ यू कैन सी नाइसली, है ना, वाइब्रेट हो रहा है उसमें. एक्चुअली इट इज वाइब्रेशन इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट या क्विक मूवमेंट है जो लगातार एक के बाद एक वो बढ़ता जाता है. एंड वाटर करेंट को अगर आपको फील करना है, आई एम गोइंग टू पुट सिंगल ड्रॉप ऑफ कलर इन द वाटर. यू कैन सी द वाटर करेंट इन दिस. Now you can see this color. I am throwing some drop of color in the water and these colors started moving towards one direction, है ना. From upper side to downward it is started flowing. Why it is happening? Because of flow of water. जैसे जैसे हम इसमें स्लोप बढ़ाएंगे या हम बर्तन को पॉट को ऊपर उठाएंगे, आप देखोगे जो कलर है वो नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है. Why it is happening? बिकॉज जो पानी का बहाव है या फ्लो ऑफ वाटर है वो डाउनवर्ड है, सो वाटर विल ऑल्सो फ्लो डाउनवर्ड. दिस इज कॉल्ड वाटर फ्लो या वाटर करेंट. तो पानी किस तरफ बह रहा है, दिस कैन बी डिटेक्ट बाय द हेल्प ऑफ skin of fishes and frogs. Fishes and frogs, it means fishes and frogs skin help them to detect the water current ki in which direction water is flowing and where they should, in which direction they have to move. In the same way, cricket and grasshoppers are also have thin membrane on their front leg which help them to feel the vibrations of the sound waves. Children, as I have shown you, whenever I throw a piece of plastic material, when I have thrown inside the water, you have seen circles made in the water. This is called actually vibrations या तरंगे जिसको बोलते हैं या waves जिसको बोलते हैं आप. In the same way, हवा में भी पैदा होता है. Air is also having these waves या these vibrations which is called sound vibrations. तो these sound, अगर if in the air any kind of vibrations are created या हम भी आवाज़ करते हैं तो उससे भी जो हमारे मुंह से निकलने वाला जो vibrations है वो एयर में जब पहुंचता है तो this vibration is catch by the cricket and grasshopper with the help of their front leg. इसीलिए रात में जब भी आप लोग लाइट्स ऑन करते होंगे तो कॉकरोच या जो भी ये इंसेक्ट्स होते हैं वो फौरन भागते हैं. Why? Because they can detect the little bit movement which you have created because of switching on the switch
या आपके मूवमेंट को उसने डिटेक्ट करा विद द हेल्प ऑफ देयर फीलर्स और विद द हेल्प ऑफ देयर फीट. नेक्स्ट इज कैट. चिल्ड्रन, कैट्स आर ऑल्सो हैविंग विस्कर्स, mustache. अगर आपने देखा होगा उनके, दे हैव लॉन्ग mustache in their faces. In the picture also you can see these whiskers are helping them to detect nearby movement. Even in the dark places also these whiskers are more useful, because every time the daytime is not there. Whenever at night, so these animals are finding their prey at night only. If they wanted to find a mice, so most of time mice are coming out at night, means in the dark. तो रात में तो इनके पास तो टॉर्च है नहीं कि बेचारी बिल्लियाँ टॉर्च लेके घूमेंगी, वेयर इज माई प्रे या वेयर इज माइस. तो they are most of time they are taking help of their these whiskers only, which help them to detect their prey or any type of movement to find out their. These whiskers are only, children, helping these animals to find out its prey or mice, है ना. You can see these white mustache, actually these are the whiskers of this cat.